Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Hello hello. Hello everyone. Hello hello. Okay. तो वेलकम टू लाइव स्ट्रीम. सॉरी कल वाली स्ट्रीम हो नहीं पाई बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज बिजी विद समथिंग. तो आज की शुरू करते हैं. सबसे पहले अगेन टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ट्रेड एडअप करेंगे, उसके बाद कुछ ट्रेडिंग करेंगे एंड उसके बाद सेशन खत्म करेंगे. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं ये सारे लेवल्स को डिलीट कर लेता हूँ. ठीक है. तो इन सबको मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ एंड जस्ट एक मिनट देना. ओके. वैसे जो डेली में दिख रहा है प्राइस एक्शन उस हिसाब से तो सेल ही दिख रहा है. ओके. एंड जो गोल्ड है वो भी सेल ही दिख रहा है. सिर्फ फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे अपन. ओके. ओके तो शुरू करते हैं. सबसे पहले डेली में जाके देखेंगे डेली में क्या हो रहा है. उससे पहले एक बार न्यूज़ देख लेते हैं. कोई न्यूज़ है क्या इस समय. तो उसके लिए हम जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पे. ठीक है. एंड आज का डे सिलेक्ट करेंगे एंड देखेंगे कि यहाँ पर कोई न्यूज़ अवेलेबल है कि नहीं है. तो यहाँ पर यूएसडी की तो कोई उतनी खास न्यूज़ नहीं है. जीबीपी की न्यूज़ है जो कि हम ट्रेड नहीं करते हैं. तो डजेंट रियली मैटर बिकॉज ऑफ कोर्स हम जीबीपी ट्रेड नहीं करते हैं. एंड कुछ देर में हम शुरू करते हैं हमारा टॉप डाउन एनालिसिस एंड उसके बाद ट्रेड राइट अप करेंगे एंड लास्ट में विल सी कि आज कोई सेटअप बनता है या नहीं बनता. ओके. तो अगर मेरी आवाज़ आ रही है क्लियरली तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ. Okay. अगर मेरी आवाज आ रही है प्लीज कमेंट करके बताओ. एंड विल गेट स्टार्टेड सून. ओके. तो शुरू करते हैं. यूरोसडी में तुम्हें दिखेगा कि मार्केट डेली में सेल की तरफ जा रहा है. यहाँ पे मोस्ट रिसेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे. अगर तुम वीकली में एक बार नोटिस करोगे तो प्रीवियस वीक वाज रियली बेरिश. तो उसे एक बार मेंटेन करके हम मार्क कर लेते हैं. मोस्ट रिसेंट सपोर्ट मोस्ट रेजिस्टेंस अगर तुम डेली में देखोगे तो ऑफ कोर्स वी हैव दिस. एंड उसके बाद जो हमारा मोस्ट रिसेंट सपोर्ट है वो है ठीक यहाँ पर. For this to go down, we need price to come down, create some kind of support, and if this support breaks, we are going to target this. इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 4 घंटे के चार्ट में. तो यहाँ से एक पिक्चर क्लियर होगी. सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो डेली में मार्केट बेरिश ही है. प्रीवियस डे वाज बेरिश टू. अगर तुम 4 घंटे के चार्ट में इसे ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ पे चीज़ें वापस क्लियर होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रीवियस डे में काफ़ी सारी ट्रेड ली थी. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन एंड दिस वन इन्हें मैंने ब्रेक डाउन किया है शॉर्ट्स में. तो अगर तुम देखना चाहो तो वहाँ से देख सकते हो. उनके पीछे की रीजनिंग क्या थी मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पर. ओके. तो जो मेजर ट्रेंड है वो सेल की तरफ है. 4 घंटे के चार्ट में भी देखोगे तो मार्केट इज गोइंग टुवर्ड्स सेल. ठीक है. अगर 1 घंटे के चार्ट में देखोगे 4 घंटे के चार्ट में तुम देखोगे तो मार्केट इज गोइंग टुवर्ड्स सेल. ओके. यहाँ पे मोस्ट रेजिस्टेंस अगर रेजिस्टेंस मार्क करेंगे तो वो है ठीक यहाँ पर. अभी कोई मोस्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं बना है बट ये वाला जो माइनर सपोर्ट है ठीक है ये ब्रेक हो रहा है. एंड वी हैव अ क्लीन कैंडल टू लेफ्ट हैंड साइड. ओके. तो इसमें 30 मिनट के चार्ट में जाओगे तो यहाँ पर एक माइनर सा सपोर्ट ब्रेक हुआ है. ओके. 1 घंटे के चार्ट में इसे हम मार्क कर लेंगे बाय अबव लेवल. बाय अबव. एंड जो हमारा 30 मिनट का चार्ट है यहाँ पर अभी कोई लेवल नहीं बना है. तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर एक सपोर्ट बने और वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये एक आइडियल ट्रेड होगी. ठीक है. तो इसलिए अभी हम ट्रेड तो नहीं लेंगे, इमिडिएटली तो नहीं लेंगे. बेसिकली एक सपोर्ट बनने का वेट करेंगे. इसे मैं मार्क कर देता हूँ एक्सटेंड करके. ये हो गया हमारा बाय अबव. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर एक लेवल बने और जो मेरा टारगेट है वो है ठीक यहाँ पे. ये है मेरा टारगेट. फॉर बाई के लिए हमारा जो ये वाला 4 घंटे में जो सपोर्ट बना हुआ है ठीक है. 4 घंटे में जो रेजिस्टेंस बना हुआ है इसका ब्रेक होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड जब तक वो ब्रेक नहीं होता वी आर
लुकिंग फॉर सेल। तो बेसिकली जो हमारा ट्रेंड है आज सेल का ही है, बिकॉज डेली में भी अगर तुम देखोगे तो मार्केट सेल सेल की तरफ ही जा रहा है। 4 घंटे के चार्ट में देखोगे तो अगेन मार्केट इज गोइंग टू सेल, ओके, बिकॉज ये वाला जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो ब्रेक नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई। एंड 1 आवर के चार्ट में देखोगे तो भी सेल है। अगर 4 घंटे के चार्ट में तुम यहाँ नजर मारोगे तो यहाँ 2 कैंडल का पुल बैक तो है, बट इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। वही अगर तुम 30 मिनट के चार्ट में देखोगे तो यहाँ पर लाइक एक सपोर्ट ब्रेक तो हुआ है, बट अगेन वी हैव टू सी कि किस तरह से बिहेव करता है। तो मैं इसे एक सॉफ्ट सपोर्ट की तरह मार्क कर तो कर देता हूँ, बट वी आर नॉट श्योर कि ये काम करेगा नहीं करेगा। वट वी आर लुकिंग फॉर इज टू क्रिएट सम काइंड ऑफ न्यू सपोर्ट। अगर वो न्यू सपोर्ट ब्रेक होता है देन वी कैन टेक अ ट्रेड फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। एंड ये हमारा डेली का लेवल है, इसलिए मैं इसे टारगेट कर रहा हूँ। एंड या दैट इज़ इट फॉर द ट्रेड। तो इसका झटपट ट्रेड अडप कर लेता है। न्यूज़ तो बिल्कुल थी नहीं। प्रीवियस डे देखा जाए तो प्रीवियस डे वॉज बेरिश, प्रीवियस डे वॉज प्रिटी बेरिश, प्रीवियस डे वाज रियली बेयरिश। उसके बाद अगर तुम 4 घंटे के चार्ट में नजर घुमाओगे तो अगेन मार्केट इज गोइंग टू सेल। 1 आवर के चार्ट में देखोगे तो वी हैव मेड अ फ्रेश एशिया रेजिस्टेंस एट 9360, तो मैं वहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। फॉर टुडे वी मेड अ फ्रेश रेजिस्टेंस एट 9362। break of this shall push the price up, okay। ये हो गया हमारा बुलिश साइड। उसके बाद मतलब ऑफ कोर्स अगर हम बाय दिख रहे हैं तो वी नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट ब्रेक। लाइक अगर तुम 4 घंटे के चार्ट में देखोगे तो मार्केट इज गोइंग टुवर्ड सेल, तो उसके लिए हमें 1 घंटे में क्या चाहिए कि एक फ्रेश सपोर्ट बने, ब्रेक हो, उसका टेस्ट हो, और उसके बाद ही हम बाय ले सकते हैं, उसके पहले हम बाय नहीं लेंगे, ठीक है। वही 30 मिनट के चार्ट में देखोगे तो वी हैव मेड दिस रेजिस्टेंस, एंड अगेन हमारे पास नीचे का कोई रेंज नहीं है तो हम उसे ट्रेड तो नहीं कर सकते अभी, ओके। एंड तो बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर सेल, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ब्रेक शall push the price up। for bearish side we have to make a support, and that support shall break to push the price further down to 8925, ओके। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम लुकिंग फॉर सेल टिल 8925, ओके। मैं इसे मार्क कर देता हूँ 8925। मेरा सपोर्ट है जो मैं देख रहा हूँ, मेरा सेटअप टाइप मुझे चाहिए ए प्लस ट्रेड, ओके। एंड जो मेरा होगा वो होगा ब्रेकिंग सपोर्ट, ये हो गया मेरा एंट्री टाइप। एंड उसके बाद मैं अगेन 0.5% यूज़ करने वाला हूँ, एंड डू आई फील एक्सेप्ट दैट, ओके, दैट इज़ इट फॉर द टुडे। व्हाट आई वांट कि मार्केट यहाँ पर एक सम काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर्म करे, और अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है देन विल टेक अ ट्रेड फॉर सेल। सो दैट इज़ इट फॉर अ सिंपल एनालिसिस टुडे। द मार्केट इज इन सेल। अगर तुम डेली देखोगे तो मार्केट इज गोइंग टू सेल, ठीक है। एंड अगर तुम 4 घंटे के चार्ट में देखोगे तो अगेन मार्केट इज़ बेयरिश। अगर 1 घंटे के चार्ट में देखोगे तो अगेन मार्केट इज़ बेयरिश, एंड 30 मिनट के चार्ट में देखोगे तो अगेन मार्केट इज़ बेयरिश। तो what we are going to do basically today is just wait। we are waiting for a support to be formed। अगर वो support form होता है and break होता है then we'll take a sell। and yeah, that is it for the simple analysis today। and अगर तुम्हारे मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो you can definitely ask me, and please मैं जो कंटेंट डाल रहा हूँ उसे देखो। we have to get to 200 subscriber by end of this month। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम देख रहे हो तो। and that is it for the top down analysis। अगर तुम्हारे मन में कोई भी क्वेश्चन आता है या तुम कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे पूछ सकते हो।
एंड जल्दी काफ़ी सारा कंटेंट भी आने वाला है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहो।
हेलो, व्हाट्सएप प्रताप, हाउ आर यू? हेलो अमन, कैसे हो? और बताओ, रिसेंटली अगर तुमने कोई सेटअप कैप्चर किया है तो बताओ, और कितने पे कितना प्रॉफिट किया है तुम मुझसे बता सकते हो? या, थैंक्स मैन, एक्चुअली दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, मुझे पता नहीं था कि 140 सब दिन जल्दी हो जाएंगे। आई वाज थिंकिंग कि एटलीस्ट 3-4 महीने और लग जाएंगे टू क्लोज टू लाइक एटलीस्ट एक 150 सब्सक्राइबर होते तक। बट आई थिंक इट्स गुड थिंग। एक्चुअली जो मेरे लास्ट दो वीडियोस थे वो काफ़ी ब्लो अप हो गए। द वन वेयर आई टॉक अबाउट ब्रोकर्स एंड द अदर वन वाज अबाउट चैट जीपीटी वन। आई गेस वो ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसलिए वो काफ़ी जल्दी ब्लो अप हो गया। इसके लिए 140 सब्स हो गए। बट अभी भी दिल्ली काफ़ी दूर है, वी हैव टू गेट अ लॉट। एंड तो प्लीज़ शेयर करो एंड स्ट्रीम को लाइक करो ताकि और लोगों तक पहुंच सके। एंड थैंक यू अगर तुमने सब्सक्राइब किया है तो पिछले कुछ रिसेंट डेज में। अब मुद्दे की बात यह है दोस्त कि बॉडी बिल्डिंग का प्रोसेस काफी स्लो है, लेकिन तुम्हें बॉडी चाहिए तो। ओके, तो 15 मिनट की कैंडल रिसेंटली क्लोज हुई है, उसे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो काफ़ी डिसेंट क्लोज है, ठीक ठाक बुलिश दिख रही है। एंड अराउंड अगर इसका साइज दिखा जाए तो इट्स अराउंड 29 पॉइंट्स। आई थिंक इट्स डिसेंट क्लोज, तो इसे मार्क कर सकते हैं हम एज अ सेल बिलो लेवल। ओके, तो इसे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। इसे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, एक्सटेंड। तो इस लॉजिक से ये वाली जो रेंज हो गई है ये हमारी हो गई है नो ट्रेड रेंज। ठीक है, तो अब सिंपल फंडा है। 4 घंटे का चार्ट में देखोगे तो मार्केट सेल की तरफ जा रहा है। एंड ये मोस्ट रिसेंट दो कैंडल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हुए, तो एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। अगर 30 मिनट 1 आवर के चार्ट में देखोगे तो अगेन यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, एंड 30 मिनट के चार्ट में भी एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। तो बेसिकली अगर मुझे इस लेवल के नीचे क्लोज मिलता है तो मैं इमिडिएटली एंटर करूँगा, काउंटिंग दिस एज H4 पुल बैक सेटअप। ओके, मतलब जो जो ए प्लस ट्रेड के अंदर ही आता है वाला सेटअप। एंड अगर मुझे अपना बायस में स्विच मैं बायस स्विच करूँगा कब, जब ये वाला लेवल क्लियरली ब्रेक होता है और उसके बाद टेस्ट होता है तब। ओके, बट तब तक जो हमारा बायस है वो इस समय सेल की तरफ ही है, बिकॉज अगर तुम डेली के चार्ट में देखोगे तो ऑफकोर्स मार्केट इज गोइंग टूवर्ड्स सेल। 4 घंटे के चार्ट में देखोगे तो ऑफकोर्स मार्केट इज गोइंग टूवर्ड्स सेल, बट थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। एंड 1 आवर के चार्ट में देखोगे तो एक रिसेंटली यहाँ पर एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है। तो वी आर जस्ट वेटिंग राइट नाउ फॉर इधर साइड ब्रेकआउट टू हैपन। हेलो। स्ट्रीम हमारी कंटिन्यू रहेगी 3 बजे तक। वी विल बी स्ट्रीमिंग टिल 3:30।
So stay tuned for that.
Hello, 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 Yasir, Aziz. How are you? Hello. निफ्टी वेल एक्चुअली मैं इंडियन स्टॉक्स देखता तो नहीं हूँ बट एक नज़र घुमाता है कि क्या हो रहा है. वेल फर्स्ट लुक से देखा जाए तो ऑफ कोर्स मार्केट इज लाइक बुलिश है बट रिसेंटली इज लाइक सपोर्ट को ब्रेक किया है नीचे की तरफ आ रहा है. इसे 4 घंटे में अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो ऑफ कोर्स वी हैव अ क्लीन स्ट्रक्चर टू द लेफ्ट हैंड साइड राइट हियर. वी हैव द मोस्ट रेजिस्टेंस मेड राइट हियर. इसे खुद ब्रेक डाउन करेंगे 1 घंटे के चार्ट में तो यहाँ पे नज़र आएगा कि मार्केट नीचे है and यहाँ पर एक मोस्ट रेजिस्टेंस बनाया है. उसके बाद जो मोस्ट सपोर्ट बना है वो है ठीक यहाँ पे. फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 30 मिनट के चार्ट में तो अगेन मार्केट इज बेयरिश एंड वी हैव क्रिएटेड दिस टाइनी सपोर्ट राइट देयर. इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 15 मिनट के चार्ट में. मार्केट इज गोइंग लाइक स्ट्रेट डाउन. इसे अगेन फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 5 मिनट के चार्ट में तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर होगी. तो हमने यहाँ पर एक रिसेंट सपोर्ट है उसको ब्रेक किया है एंड मार्केट इज टेस्टिंग इट राइट नाउ. लाइक इट वेंट अप एंड इट टेस्टिंग इट राइट नाउ. ठीक है तो एक झलक मारे तो डेली में मार्केट बेयरिश है, 4 घंटे में भी बेयरिश है, आवरली में भी बेयरिश है, 30 मिनट में भी बेयरिश है. तो ऑफकोर्स ओवरऑल वी आर लुकिंग फॉर सेल. तो अगर मैं इसे ट्रेड करूँगा तो बेसिकली मैं एक 15 मिनट कैंडल बुलिश खत्म होने का वेट करूँगा. फिर उसके बाद 5 मिनट में ट्रिगर पॉइंट्स ढूंढूंगा अगर मुझे यहाँ पे कोई सेल पॉइंट्स दिखता है तो. एंड दिस विल बी माई रेंज, दिस विल बी माई हिट जोन जहाँ से मैं पोटेंशियल सेल के लिए अपॉर्चुनिटीज देख सकता हूँ निफ्टी में. या तो दैट इज इट फॉर लाइक टॉप डाउन एनालिसिस ऑफ निफ्टी ऑन 5 मिनट चार्ट. ओके तो यूएसडी में वी आर हैविंग अ ब्रेकआउट राइट नाउ बट अगेन वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस ट्रेड बिकॉज हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बेरिश की तरफ है. एंड फॉर बुलिश सिनेरियो अगर मुझे ये ट्रेड लेनी ही है तो मैं इस कैंडल के क्लोज का वेट करूंगा एंड प्राइस शुड कम डाउन टेस्ट सम काइंड ऑफ सपोर्ट एंड अगर वो सपोर्ट हेल्ड करता है देन विल टेक अ ट्रेड. But right now, I'm not going to take any trade.
है ना, बिल्कुल है। ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, अगर ये कैंडल क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे एंड देखते हैं पॉसिबल सेटअप अगर मिलता है 3 बजे के पहले। हेलो क्विज आर फैक्ट, हाउ आर यू? हेलो। हेलो एवरीवन।
ओके, हेलो एवरीवन। एक्चुअली हमारी जो बुक है वो रीड करना शुरू करेंगे। हम रीड कर रहे हैं ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस, एंड 1:30 बजे से शुरू करेंगे। आधे घंटा रीड करेंगे और उसके बाद स्ट्रीम को ख़त्म करेंगे। ओके, तो डेफिनेटली स्ट्रीम को लाइक कर दो एंड विल गेट स्टार्टेड। तो लास्ट टाइम हम चैप्टर था हमारा 7th चैप्टर। ओके, 69% ऑफ द बुक हमारी रीड हो चुकी है एंड वी आर एट पेज नंबर 157। ओके, तो शुरू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि अ, हाँ, तो मैं प्रीवियस पेज भी रीड करता हूँ जस्ट टू गिव लाइक अ क्लैरिटी। तो हम थे कि जो फोर कॉमन जो क्वालिटीज़ होना चाहिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर में, उसमें से नंबर एंड कुछ प्रोबेबिलिटीज़ थी जो हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें से नंबर 1 थी कि द ऑड्स आर इन योर फेवर बिफोर यू पुट ऑन अ ट्रेड। मतलब हमें चार चीज़ें एब्सोल्युटली आनी चाहिए बिफोर वी एंटर अ ट्रेड। उसमें से नंबर 1 थी कि द ऑड्स आर इन योर फेवर बिफोर यू पुट ऑन अ ट्रेड। मतलब जब भी तुम ट्रेड एंटर कर रहे हो उससे पहले खुद से पूछना चाहिए ये कि क्या प्रोबेबिलिटी तुम्हारी साइड में है एंड क्या तुमने अपनी एज के हिसाब से ट्रेड ली है। एंड उसके बाद सेकंड पॉइंट था हाउ मच इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू टू फाइंड आउट इफ द ट्रेड इज गोइंग टू वर्क। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट वाला पैरामीटर है कि तुम कितना अफोर्ड कर सकते हो एक ट्रेड में टू फाइंड आउट कि ये ट्रेड एक विनर होगी या एक लूज़र होगी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था वो था यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी ऑन द मार्केट। मतलब तुम कहीं पर भी कोई भी ट्रेड लगा सकते हो एंड इट डजेंट मैटर कि तुम लाइक लॉस ही करोगे। इट्स टोटली पॉसिबल कि तुम्हारा प्रॉफिट भी हो जाए। तो उससे ये लॉजिक निकल के आया कि तुम्हें मार्केट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होने की ज़रूरत नहीं है एक विनर ट्रेड लगाने की। तो मैं एंड नंबर 4 इज़ एनीथिंग कैन हैपन। जो फोर्थ नंबर का प्रिंसिपल है आई गेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है एनीथिंग कैन हैपन। एंड अगर तुम उस वे से लेते हो कि एनीथिंग कैन हैपन तो तुम कभी भी एक ट्रेड में ओवर रिस्क नहीं करोगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ मैं। देन हाउ कैन द मार्केट मेक यू रॉन्ग? what in the What information could the market generate about itself that would cause your pain avoidance mechanism to kick in so that you exclude the information from your awareness? None. None that I can think of. If you believe that anything can happen and that you don't need to know what is going to happen next to make money, then you will always be right. Your expectation will be always be in harmony with the condition as they exist from the market perspective, effectively neutralizing your potential to experience emotional pain. बेसिकली यहाँ पे राइटर इस बारे में बात कर रहा है कि तुम अगर मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे एंड मार्केट में अपना एक रूल बैठा के चलोगे कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो अगर मार्केट में कुछ भी होता है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है या तुम्हारी टीपी हिट होती है, तो तुम्हारा जो मेंटल बैलेंस है उससे बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है by the same token how can a losing trade or even a series of losers have the typical negative effect? If you really believe that trading is probably the pro- if you really believe trading is probability or numbers game, if your edge puts the odd in your favor, then every loss puts you that much closer to a win. When you really believe this, your response to losing a trade no longer negatively affect quality. तो बेसिकली यहाँ पे ओके गाइस, मैं थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ रीडिंग बिकॉज हमारे पास एक ट्रेड जनरेट हो रही है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सेल, आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्रेड। तो रीजनिंग बहुत सिंपल है ट्रेड के पीछे की। ऑफ कोर्स ये वाला जो सपोर्ट है ब्रेक हो रहा है एंड आई कैन टेक अ ट्रेड फ्रॉम राइट हियर। ठीक है, तो मेरा सेल लूँगा, मैं शॉर्ट करूँगा मार्केट को और जो मेरा एस एल है वो रहेगा ठीक यहाँ कहीं रखते हैं। ठीक है, हाँ 25 का एस एल है एंड जो मेरा अभी ट्रेड एग्जीक्यूट होने की, ओके हम सिर्फ अभी प्लानिंग वाली स्टेज में है, तो प्लीज़ अभी एग्जीक्यूट मत करना ट्रेड को। तो जो मेरी टीपी रहेगी वो रहेगी ठीक यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो ये लाइन को मैं मार्क कर लेता हूँ, ये मेरी ट्रिगर लाइन है।
बेसिकली आई नीड अ क्लोजर बिलो दिस लेवल। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पर क्लोज बिलो मिलता है, क्लोज बिलो, विल टेक अ ट्रेड फ्रॉम हियर टू हियर, दिस विल बी आवर टारगेट। अगेन मैं बता रहा हूँ, अभी हमने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, वी हैव टू वेट फॉर अ क्लोजर टू हैपन, एंड अनलेस द क्लोजर हैपन वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस ट्रेड। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा ट्रिगर पॉइंट हो चुका है। मैं इसके नीचे अगर मुझे क्लोज मिलता है देन एंड देन आई ओनली टेक ट्रेड एंड माय एसएल विल बी राइट हियर। जो मेरा एसएल है वो एटीआर वैल्यू के हिसाब से है, यानी कि मेरा एटीआर वैल्यू है 10 इंटू 1.5 एंड दैट विल बी माय एसएल राइट हियर। ठीक है, तो अभी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई है, लेट मी टेल यू, हमने ट्रेड नहीं लिया है। वी आर वेटिंग फॉर वी आर वेटिंग फॉर अ कैंडल क्लोजर बिलो दिस लेवल एंड देन विल एंटर अ ट्रेड। ओके, तो जस्ट वेट फॉर नाउ अनलेस, अगर तुम रिस्क के बेट खेलना चाहते हो तो मेंटर कर सकते हो, बट आई वोंट रिकमेंड दैट। डेफिनेटली वेट फॉर अ कैंडल टू क्लोज, एंड ऑफ कोर्स अभी मार्केट ओपन हुआ है, तो एटलीस्ट ये 15 मिनट कैंडल का वेट करता है, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। ओके, तो तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं। देर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स फॉर एनी गिवन सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट डिफाइंस एन एज। इफ एवरी लॉस पुट्स यू मच क्लोजर टू अ विन, मतलब देखो क्या होता है, जैसे कि हम सिक्का उछालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 बार अपना कॉइन है उसको टॉस कर रहा हूँ, एंड मेरा कंटिन्यू 3 बार टेल्स आया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये तुम्हें समझना है। तो ईच टाइम अगर तुम लूजिंग स्ट्रीक से गुजर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि लाइक, तो ईच टाइम अगर तुम लूजिंग स्ट्रीक से गुजर रहे हो तो यू हैव टू रिमेंबर कि जब मार्केट जितना तुम लूज कर रहे हो, इवेंचुअली अ विनर विल कम। ठीक है, मैंने अभी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया गाइस, लेट मी टेल यू अगेन, वी नीड अ क्लोजर बिलो दिस लेवल। ठीक है, 15 मिनट क्लोजर बिलो दिस लेवल विल बी गुड। अभी अभी मार्केट खुला है, यूएसए का मार्केट, सॉरी लंदन सेशन खुला है, तो be on your guard, we are looking for sell. Okay, the reasoning is simple, market is in sell on 4 hour chart, market is in sell in 30 minute, and market is sell in 1 hour chart. So basically we are looking for this level to break, we need at least 15-minute closure below this level and we'll enter the trade, but right now there is no trade. See, I just mark this level, अगर इसके नीचे market close होता है then we'll take a trade from here to here, maybe we'll target around 10 to 20 pips, but till then we're just waiting right now. Okay, तो मैं पैराग्राफ कंटिन्यू करता हूँ। if every loss puts you if every loss puts you that much closer to a win, you will be looking forward to the next occurrence of your edge, ready and waiting to jump in without the slightest reservation or hesitation. On the other hand, if you still believe that trading is about analysis or about being right, then after a loss you will anticipate the occurrence of your next edge with trepidation, wondering if it's going to work. This in turn will cause you to start gathering evidence for against the trade. You will gather evidence for the trade if you fear missing out is greater than your fear of losing, and you will gather information against the trade if your fear of losing is greater than your fear of missing out. In either case, you will not be in the most conductive state of mind to produce consistent result. तो बेसिकली आई थिंक यहाँ पे बात क्या कर रहा है मार्क डगलस, कि अगर तुम प्रोबेबिलिटी पे बिलीव करते हो एंड, तो किस तरह से तुम्हारी हेजिटेशन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तुम ट्रेड लगाने वाले हो, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, फॉर एग्जांपल तुम एक ट्रेड लगाने के लिए रेडी हो एंड तुम्हारे अंदर अगर हेजिटेशन आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं तुम प्रोबेबिलिटी पे बिलीव नहीं कर रहे हो। सी, यू हैव टू बिलीव इन प्रोबेबिलिटी एज कि जब भी तुम एक ट्रेड लगाओ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये ट्रेड प्रॉफिट में भी जा सकती है, ये ट्रेड लॉस में भी जा सकती है, एंड इसका विनर और लूज़र होने का जो चांस है वो 50-50% है। ठीक है, और अगर तुम प्रोबेबिलिटी पे पूरा बिलीव रखते हो तो तुम बिना हेजिटेशन के ट्रेड लोगे, लेकिन अगर तुम्हारा एनालिसिस की तरफ ज़्यादा ध्यान है तो दैट विल कॉज यू टू बी रॉन्ग, एंड इट्स टोटली पॉसिबल दैट इट्स गोना लाइक जनरेट अ फॉल्स सिग्नल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पॉइंट है, एन एज इज नथिंग मोर देन अ इंडिकेशन ऑफ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर। बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमें हमारी प्रोबेबिलिटीज़ में बिलीव रखना है। ओके,
The more you believe in your probabilities, the better it's going to be for your trading career. Creating consist creating next line पढ़ता हूँ मैं. Creating consistency requires that you completely accept that trading isn't about the hoping, wondering, or gathering evidence one way or the other to determine if the next trade is going to work. The only evidence you need to gather is whether the variable you use to define an edge are preset प्रेजेंट एट एनी गिवन मोमेंट. तो बेसिकली यहाँ पे मार्क डगलस बात कर रहा है कि हमें जो हमने पैरामीटर सेट किया है हमारा एज का, अगर वो वेरिएबल सेटिस्फाई हो रहा है तो तुम्हें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, और अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करनी है. ठीक है. when you use other information outside the parameter of your edge. For example, कभी कभी क्या होने लगता है, हम कोई दूसरे इंडिकेटर को चूज़ करने लगता है, ठीक है, देखने लगता है अचानक से, एंड उससे क्या होता है, हमारी एज है वो ख़राब होती है. इसलिए कोई भी एक टाइप का इंडिकेटर यूज़ करना, कोई भी एक टाइप की स्ट्रैटेजी यूज़ करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. when you use when you use other information outside the parameter of your edge to decide whether you will take the trade, you are adding random variable in your trading regime. Adding random variable make it extremely difficult, if not impossible, to determine that works and what not impossible. To determine what works and what doesn't, if you are never certain about the if you are never certain about the viability of your edge, you won't feel too confident about it. See, अगर मतलब यहाँ पे माउंट एवरेस्ट का एक मतलब है कि जितना तुम क्लोजर टू योर एज रहोगे, उतना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि आउट ऑफ टेन टाइम और आउट ऑफ 20 times you are going to be winner at least 60 to 70% of the time. Okay, this is all about probability and all about your edge. On the other hand, if you believe that an edge is simply a higher probability of one thing happening over another, and there's a random distribution between winners and losers for any given set of variables that defines an edge, why would you rather why would you gather other evidence or against a trade to a सी यहाँ पे बेसिकली यही बात हो रही है कि अगर तुम अपनी प्रोबेबिलिटी, तो तुम कभी भी कोई दूसरा इंडिकेटर की तलाश में जाओगी ही नहीं. ठीक है, सिंपल सी बात है. ऑफ कोर्स नहीं जाओगे अगर तुम्हारी एज काम कर रही है तो. To a trader operating out of these two beliefs, gathering other evidence wouldn't make any sense. ठीक है. तो मैं ये वाला जो लाइन है इसे मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर लेता हूँ, बिकॉज दिस इज रियली इम्पोर्टेंट. ठीक है, इसे मैं नोट कर लेता हूँ. मैं रिपीट करता हूँ. On the other hand, if you believe that an edge is simply a higher probability of one thing happening over another, and there's a random distribution between winners and losers for any given set of variables that define an edge. Okay, तो edge का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ होने की probability ज़्यादा है एक दूसरी चीज़ होने की. For example, the probability of winning a trade is greater than probability of losing a trade, then it's a good setup. Okay, एंड देर इज़ अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स. मतलब ये पता लगाना कि ये वाली ट्रेड विनर होगी या ये वाली ट्रेड लूज़र होगी, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल unless you're God, of course. And even God cannot predict that because, of course, it is based on human behavior. Okay, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ता है. Gathering other evidence makes Gathering other evidence makes about as much sense as trying to determine whether the next flip of coin will be heads after last 10 flips came up tails. Regarding regardless of regardless of what evidence you find to support heads coming up, there is a still 50% chance that the next flip come up tails. By the same token, regardless of much evidence you gather to support acting or not acting on a trade, is still only makes one trader somewhere in the world to negate the validity of any, if not all, of your evidence. The point is, why bother
If the market is offering you a legitimate edge determining determine the risk and take the trade, मतलब अगर तुम्हें कोई एज मिल रही है तो तुम्हें बेसिकली ट्रेड एग्जीक्यूट करना है. ओके, तो फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज एवरी मूवमेंट इन द मार्केट इज यूनिक. मतलब हर एक टेक मार्केट का हर एक कैंडल पिछली कैंडल से यूनिक है. ओके, एंड ऑफ कोर्स तुम एक सिमिलैरिटी फाइंड कर सकते हो बिटवीन, ऑफ कोर्स तुम एक सिमिलैरिटी फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ ट्रेड्स के बीच में, एंड दैट इज़ टोटली पॉसिबल कि दो यूनिक इवेंट के बीच में कोई रैंडम चीज़ तुम्हें कॉमन मिल जाए, बट दिस इज़ नॉट दैट, एंड दिस इज़ लाइक वेरी कॉमन. ओके, तो हम हैं पेज नंबर 157 में. अगर तुम मेरे साथ रीड कर रहे हो तो तुम रेफरेंस ले सकते हो. वी आर वी आर रीडिंग Trading in the Zone by Mark Douglas, and I'm right now on page number 157. The paragraph is last. The paragraph name is Every moment in the market is unique. ठीक है, मतलब जो हर एक कैंडल होती है मार्केट में वो प्रीवियस हिस्टोरिक कैंडल से टोटली डिफरेंट है. Of course, there can be two similarities between those trades, but the chances of those two historic event being same is close to impossible. ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ता हूँ. एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक. टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट द concept of uniqueness. Unique means not like anything else that exists or has ever existed. As much as we may understand the concept of uniqueness, our mind don't deal with it very well on a practical level. मतलब जो यूनिकनेस है वो मार्केट, यूनिकनेस जो एग्जांपल है, यूनिकनेस का मतलब क्या होता है कि टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. ओके, बट हमारा जो माइंड है वो उसे उस तरह से प्रोसेस नहीं करता. ओके, तो ये इस लाइन से मतलब है. मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूँ. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, our minds are hard to automatically associate As we already discussed, our minds are hardwired to automatically associate anything in the exterior environment that is similar to anything that is already inside of us in the form of memory, belief, or attitude. This creates an inherent contradiction between the way we naturally think about the world and the way the world exists. The two moments in the external environment will ever exactly duplicate themselves. ठीक है, मतलब ऐसा कभी नहीं होने वाला. To do so, every atom or every molecule will have to be in the exact same position they were in some previous moment. Not a very likable possibility. Yet, based on the way our minds are designed to process information, we will experience the now moment in the environment as being exactly the same some previous moment as it exists inside our mind. सी तो बेसिकली यहाँ पे माइंड बात कर रहा है कि हमारा माइंड जो है वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को ट्रीट करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास मार्केट में तुम्हें एक लेटेस्ट तुमने ट्रेड लगाई और उसका लॉस हो गया, एंड सेम पैटर्न तुम्हें कुछ समय पहले दिखा था जिसमें तुम्हें भी लॉस हुआ था, तो तुम्हें तुम्हारा माइंड एक कनेक्शन बना लेगा दोनों सेटअप के बीच में कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉस. बट दिस इज़ कम्प्लीटली फॉल्स. There is no similarities between those two particular environment of trade because all the information is different and all the components are different of each trade. यानी कि anything can happen in the market. Okay, which is our principle number one. What separate the best traders from all the rest? मैं next paragraph पढ़ रहा हूँ. In each moment is like no other. If each moment is like no other, then there is nothing at the level of a rational experience that can tell you for sure that you know what will happen next. मतलब बेसिकली हम ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है अगला, यानी बेसिकली हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. सो आई विल से अगेन, व्हाई बॉदर ट्राइंग टू नो. अगर प्रोबेबिलिटी ही हमारे से अपोजिट है तो हम कैसे, तो उस चीज़ में एफर्ट लगा के मतलब ही नहीं है कि प्रिडिक्ट करना कि मार्केट में क्या हो सकता है. when you try to know, you are in essence trying to be right. अगर सी अगर हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं और अगर हम रॉन्ग हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स वो एक फेलियर की फीलिंग मन के अंदर लाइक पैदा करता है, राइट. एंड दैट इज ऑलरेडी
like opposite of the market. So just don't try to predict the market. This is what the writer wants to say here. Next line पढ़ते हैं. I'm not implying here that you can't predict what the market will do next and be right, because you certainly can. It's in it's in the trying that you run into all the problems. If you believe that you correctly predicted the market once, you will naturally do it again. As a result, your mind will automatically start scanning the market of for the same pattern, circumstances, or situation that existed the last time you correctly predicted its movement. When you find it, your state of the mind will make it seem as if everything is exactly as it was the last time. The problem is that, from the market's perspective, it is not the same. As a result, you are setting yourself up for the disappointment. बेसिकली यहाँ पे बात चल रही है कि अगर तुम मार्केट से एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हो, ठीक है, एंड मार्केट से एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट इस तरह से नहीं या उस तरह से जाएगा, एंड अगर तुम्हारा लाइक जो प्रिडिक्शन है वो गलत होता है तो तुम फेल हो जाते हो खुद की नज़रों में, एंड दैट इज़ बेसिकली हाउ यू स्टार्ट लूजिंग द ट्रेड्स. ठीक है. ठीक है, तो 10 मिनट में हम हमारी स्ट्रीम को क्लोज करेंगे. ओके, एंड मैं फाइनल कुछ पेजेस पढ़ता हूँ, एंड उसके बाद एक रफ एनालिसिस करेंगे फिर से, एंड उसके बाद ट्रेड बंद करेंगे, एंड फिर शाम को देखेंगे कि शाम को अगर कोई पॉसिबल हमें सेटअप दिखता है कि नहीं दिखता है. ओके. ओके, तो हम हैं पेज नंबर 158, पैराग्राफ चल रहा है सेकंड, एंड आई रीड इट नाउ. If each movement is like no other, then there's nothing. Next second. What separates the best traders from all the rest is that they have trained their minds to believe in the uniqueness of each movement. This belief act as a contracting force. Counteracting force. This belief act as a counteracting force, neutralizing the automatic association mechanism. When you truly believe that each movement is unique, then by defining there isn't anything in your mind for the association mechanism to link the moment to. तो बेसिकली अगर तुम मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कुछ, एंड इस तो तुम्हारा बिलीफ होगा कि मार्केट इज़ यूनिक, तो यहाँ पर एक लाइक माइंड के अंदर एक पैटर्न इमर्ज हो जाएगा कि नथिंग इज़ यूनिक इन द मार्केट. तो ऑफ कोर्स यू वोंट रिस्क मच, you won't be risking outside of your edge, and you'll be safer trader. When you truly believe that when you truly believe that each movement is unique, then by definition there isn't anything in your mind for the association mechanism to link the movement to. This belief acts as an internal force causing you to disassociate the now movement in the market from any previous movement filed away in your mental environment. The stronger your belief in the uniqueness of each movement, the lower your potential to associate. The lower the lower your potential to associate, the more open your mind will be to perceive what the market is offering you in the perspective. गाइस 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है, लाइक उसके बाद हम लास्ट जो पेज नंबर 160 में लास्ट लास्ट पैराग्राफ है, मूविंग टुवर्ड्स द जोन, वो पढ़ेंगे, एंड उसके बाद स्ट्रीम को क्लोज करेंगे.
ओके, हेलो एवरीवन। कुछ दिन में स्ट्रीम को बंद करते हैं, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो बेसिकली मार्केट में क्या हुआ है, ये हमारी लंदन ओपन वाली कैंडल है, एंड ऑफ कोर्स इट क्रिएटेड सम काइंड ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट राइट हियर, बट एक डेफिनेट क्लोज नहीं मिला, इसके लिए हमने वाली ट्रेड नहीं ली। एंड अगर ये कैंडल वापस बुलिश क्लोज होती है, अगर एक घंटे के चार्ट में तुम देखोगे, और अगर बुलिश क्लोज होती है तो विल वेट फॉर सम काइंड ऑफ पुल बैक टू हैपन, एंड अगर पुल बैक होकर सपोर्ट कैरी करता है, देन विल टेक अ ट्रेड फॉर द अपसाइड। ओके, सो या, दैट इज़ इट फॉर आवर स्ट्रीम टुडे। अब मैं स्ट्रीम को क्लोज करता हूँ। अगर तुमने आज ट्यून इन किया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर तुमने सब्सक्राइब किया है तो अगेन थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज स्टे ट्यून फॉर द कंटेंट, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, एंड विल सी यू टुमारो। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो।